So with just few support and resistance line or trend line, can we have anticipated this HL breakout or not? I'm not considering any other RSI volume or anything. Just with the help of trend line and resistance line, can we have anticipated this one? Anyone? Show some energy. What is happening? Now look at this. This was the previous peak, and I got one more peak here. I've seen one peak and another peak. How to know when this trend will? Because now this is a peak, higher peak and lower peak below this. So at this point, trend is not very clear. Lows are being made higher and highs are being made lower. So this price is getting squeezed here, right? So somewhere it will be, some side it will break. Either it will break the above line, the peaks, either it will break the upside, either it will break the downside. So what you can do? You can simply watch what is happening and follow. So when it broken out upside, what you can do? You know that upside, this is the resistance, which will be the target. So at 1062, somebody interested for 100 rupees, he can take the trade. It has given here, right? After retest, always remember, if some resistance, some supports are, the resistance will become support at immediate breakouts. Most of the time, say 90% of the time, all the resistance will be retested. Even on the longer time frame, the price comes down, like what is we are witnessing this month. Whatever was the breakout point is being retested this month. Corrections happens to retest the support. Whether it was actual support or trend should be established. Lot of time we will see this kind of selling and retested. And once this goes up, then now it is very clear that trend is upside. So anyone like to ask any question till here? Do participate, guys. Don't be silent. Okay. Anyone like to take any other stock name? I will discuss. Okay, let's see really gear. Delete all the lines. We'll start with the monthly. From monthly chart, we have a continuous falling price and then having a reversal. So we should be interested to know at what point the reversal will establish, if the prices came down from 600 rupees to 17 rupees. This is the risk of the market. If you do not exit in a long term, this is also possible. From 2008, 600 rupees to 17 rupees. So at certain point, we should know when we must exit. Okay, so let's start doing whatever we are knowing till this point. We know that when prices were here, this made low here, so it will be a support. So once this price has broken, do we know that we should exit here? Or at must exit below this? Are we sure? Clear? First of all, this is not a good trade to enter, but whatever is the point. This point, once a broken support is broken, price can go to 90% fall. This is possible. Now let's see trend resistance. This was the peak. This is the next peak here. This is the next peak, all matching in one particular line. So can we say this is a trend resistance? Yes. So the prices will face a resistance here. Will face a resistance here. So somewhere here could be target also, because the way it has fallen,
This is a weak resistance because it has fallen so quickly that this zone will go quickly also. This is a rule. The zone which has not given much of a support will not give much of a resistance either. Okay, so let's have a more closer pictures. This zone, this was the trend of fall. It was falling on this particular trend, say orange line. After that, it becomes steeper, right? After somewhere here, it has given some consolidation, right? Some consolidation. So here, because it was fallen so fast, and first bounce came at this price, this particular price, somewhere here. So we know till the time the prices will cross this level, the trend will remain bearish. Agree? Yeah. Because it bounced and not gone above this, so this is a resistance line. There is a two candles to, this is a monthly chart, okay? So 2-month closing, and here I have seen the resistance. So after this, somebody once done with his fundamental can start considering from this point. Now trend is very bearish, so this kind of stock should be avoided. Should be avoided until and unless it is very compelling story. The fundamental has completely changed. CEO was something else. Now someone else has to pour. If there is enough compelling story to consider this stock that this is a reversal, then only catch this kind of stocks which has gone from 600 to 16 rupees. Okay. So we can establish with the some whatever we know till this point, we can establish the supports, resistance. And now let's go to the weekly chart. On the same stock, it was going down with below the 20-week and 50-week. After this point, you can say this was the resistance here. Now we can make it more pinpoint here. This was a resistance, same was a 200-week resistance also, 200-week EMA. Agree here? Let me delete all the lines. This point was a resistance. This point made a peak, so this was again a resistance. So after this is a 200-week moving average, which will be act as a resistance. So it acted resistance and becomes support also. Can we see what happened with respect to weekly EMA? Once crossed, becomes support. This area becomes resistance. Once crossed, this becomes support. So stock first moved from 50-week and 20-week together, is now moving on. It is moving above 20-week line, right? Right? It is moving above the 20-week. So there is a trend. What is the trend here? The stock is moving above the 20-week. So if it breaks, what should we do? Again, we will trail whatever previous low is made. If this is broken, I should exit. Yes. Right? 20-week is broken. This is the trend. This trend is broken. Previous low is broken. Now we should book the profit. This is how we can consider a trade. Once again, take all the lows. Is price moving on this line? So when it was falling, can we anticipate that here we can get a bounce? We have to wait for the trend to take a reverse here. Yeah, but can we anticipate we can get a bounce here? Yes. It was a bounce here. It was a bounce here. It was a bounce here. Chances are there it will take. So this is a weekly chart. See what happened on daily chart. Once you got this rejection candle, somebody can take a trade, right? This is not happening on a weekly basis. Na? Somebody targeting this stock, he can see here getting the reversal. I'm not saying whether it is a good trade or not. Reversal happened. That's the thing we should consider.
Now here on the hourly chart, you know that this is a one peak, this is a next peak, this is a multiple peak. You can take trade here. So Yeah. this is the way to define the resistance and define when it is the best point is there where you know your stop loss. What will happen if I'll take a stock here? If you take here, what will happen? If it breaks this one, you will exit. You have anticipated that price will bounce from this particular line. This is thick white line. So somebody can take trade here with a stop loss below this line, that if it breaks, I will exit. And if it reverses, I will have a profit. This is not the best way to do that, but this will work. This will work 70-80% time. Then once a trend is established, this will give a bounce, pinpoint bounce. This line was not perfectly right. Now you can see the pinpoint bounce. Exact point has become support. So EMA was not that precise support, but trend line was a precise support. So with this logic, what should you do? If trend is broken, definitely you respect the decision. Take the decision. EMA might remain little, you can say, some percentage you have to give some margin to EMA. Don't always take EMA as a precise that this is broken, 1 rupee is below it, let me close the trade. It is not like that. Let the candle made. Let it be very clear that now trend is broken on the EMA. But always draw some supports near below that. If support is very far away, you have no support, like the way we are seeing in the Linde trade, Linde, right? It has zoomed. So there is no horizontal support in those areas. So if that breaks, EMA will be only point of, you can say, support. Let's see some more stocks. Anyone like to take any name? Okay. Yeah, see Burger King. Burger King is a hot stock. Let's see, it's a new one, right? So there is not much a history. We can go weekly. You can see what is happening on weekly chart. Okay, it is above the 20-week average. Above 20-week, stock is considered bullish. It's a 20-week price are above the 20-week. It's good. It has made a top here, somewhere here, and never closed above it. Was this a resistance when price was moving up? Yes. Yes, this is the resistance. So somebody, if taken a trade here with some logic, and the logic is very clear, you got the peak, you got certain peaks, you can go to the daily chart. Let's see, because this is very new. So you can do here, one peak you have here, another peaks you have here. You can anticipate that here it will be a reversal. So the best way is to let it cross the previous resistance. Previous resistance, what was the previous resistance here? Is this a resistance? Because this stock is new, you will find it more volatile because trend has not emerged, right? See, after a long time, when lot of trades will happen, some trend will emerge, and that will be stronger because more people have participated on this resistance and these supports. This is like very less people have, very less days it has participated. So this can easily break. But when once a more number of people, more number of time, it will pass through it, then you will know that this is a definite resistance, this is a definite support. Earlier also it will be resistance, but it can easily break also. That you should keep in mind when you are trading in any new script. Okay, so this was a resistance. So once it crossed, same thing has become support. Same thing has become support. Now, as I said, always draw the range other than one particular one straight line, because especially when the stock is new.
or maybe the trend is not very much clear. Like here, the price range is in this zone also, this zone also. It is crossing here also. So you know that it is not, trend has not emerged very precisely. So you should keep some range for resistance also and support also. So same thing happened. This particular area was resistance. Now this particular area becomes support. Okay. Is it clear? Any question? Now, how do we know that we should have exited here? First of all, resistance. First of all, resistance. So we will be cautious here. Next, this was the low points. Forget about this price. Was this a trend or not? This was a trend, but it was not crossing the previous high. Previous high has become a resistance here. So just like HAL, you will anticipate the breakout. Just like HAL, Hindustan Aeronautical Limited chart we have seen, there was two possibilities. Either it will give a breakout or breakdown. So once it has given breakdown, what will you do? Next is पे resistance पे and exit Next करना support पड़ेगा break कर, next support break कर, exit या करना पड़ेगा. कोई EMA तक वेट कर सकता है, कोई यहाँ एंट्री किया है तो उसके लिए ज्यादा कुशन है. Different entry point also can give you different cushion to survive the market, right? New people will always have a difficulty to establish, right? Once you have good entries, what you will do? You can take little more sharper corrections, right? Because still it is a bullish, still it is up 50 EMA. But definite thing is, if this trend is broken, price will definitely come down. Till what point it will take the reversal, that's a different point. It will take either 50 EMA or next support, we don't know. But if trend is broken, definitely it is coming down. So someone has to take the decision here, he has to take the decision. He should not ask question here, should I exit? He should not ask an exit question at support. He should ask the question when support is broken. Once this support will be broken, he should ask the question. Understand what I'm trying to say? Yeah. Once a trend is established, you cannot ask to enter here or here. There will be risk. You can enter, but the risk is next support is far away. So your reward and risk is equally distance. So it's not a good trade. At least if you are risking 1 rupees, try to earn at least 3 to 4 rupees, right? So even if you are wrong 50% of the time, you will lose 50% time 1 rupees only. But if you right 50% of the time, you will earn 4 rupees. So ultimately you are earning 4x. So equal number of trades, you will be winner if you take the correct trades, even if your accuracy is 50%. Okay. Anybody like to say any other name other than Basavaraj sir sale? Anyone like to take complex? Take the complex. Bank of Baroda. Bank of Baroda. Sorry. You can take the complex. This Zelmok. Zentech, Zensar. No. भाई स्टॉक तो ऐसा ढूंढो जिसका नाम ले सको. सब बैंक नहीं, ऑफ लेकिन बड़ौदा. आपके लिस्ट में, आपके वेटिंग लिस्ट में, आपके इसमें ना जो नाम बताइए. Zelmok. हाँ, Zelmok. हाँ, जो कॉम्प्लेक्स है वो एक्चुअली उसका नाम जो है उल्टा है. कॉम्प्लेक्स. अच्छा ठीक है. चलिए इसको मंथली चार्ट से देखते हैं. इसकी मंथली चार्ट से हमेशा कोई भी कहानी एकदम शुरू से शुरू करेंगे. एक राजा था ऐसा, एकदम शुरू से शुरू करेंगे कहानी. ओके. तो ये जोन रेजिस्टेंस था. जब ये जोन क्रॉस हुआ, ये जोन के नीचे प्राइस कभी नहीं जाता था. इतना बड़ा बुलिश मंथली कैंडल बना, एक ही महीने में पूरे महीने को खा गया, इतना बड़ा सा. और उसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ से ट्रेंड इमर्ज हो गया. अगर आप यहाँ पे बात कर रहे होते तो क्लियरली हम क्या बात करते? दिस इज अ बुलिश ब्रेकआउट, राइट? सो प्राइस हैज गॉन अप. Now it has made some resistance here. Now monthly chart is not looking good because it's very new. So let's go to the weekly chart and see what is happening.
on the weekly chart, this line was very precise. See, multiple points has been rejected here. And once it is rejected with a big candle, till now it was rejected on the wick candle. Once this candle has emerged, we can take a risk here because we know if it is broken, my loss will be 10 rupees. But if this is a good start with other studies, I know that this is a good start, then from here, I can target the bigger targets from here. I don't know whether it will go here, or maybe 1000. I don't know. But at this point, I know that it has consolidated here at a good range. If it crosses the previous high, which become again a support, see, वो स्टेप बाय स्टेप चलते चलते वो माइल्स कवर होते हैं. तो किसी स्टॉक में आप अच्छी एंट्री करते हो और वो एक एक स्टेप अगर कवर करता रहता है, जब तक वो रिवर्सल नहीं लेता है ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठे रहना है इसमें. तो अब यहाँ पे इस जोन में क्या हुआ, अब यहाँ जोन पे देखते हैं. ये तो पुरानी स्टोरी हो गई. यहाँ पे ये जोन में एक ये हॉरिजॉन्टल लेता हूं तो उससे ऊपर जा रहा है प्राइस, ये लेता हूं तो उससे थोड़ा और ऊपर है. तो बेटर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की जगह पे ट्रेंड लाइन ले लेता हूं. यहाँ पे एक ट्रेंड जैसा दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये मेरा सपोर्ट रहेगा. ओके, इसको यहाँ से ले सकता हूं. एग्री? एनी इश्यू स्टिल हियर? ओके, और रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करते हैं. तो रेजिस्टेंस में मुझे क्या दिख रहा है, एक पीक यहाँ है, अगला पीक यहाँ है, ये जोन एक पूरा रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये भी जोन दिख रहा है. तो एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करता है, ये पर्टिकुलर एरिया. Can I say this was the resistance, and when the prices has crossed, this will become support, right? Can I say that this price plus minus 0.5%, this was a support? Let's go to daily chart and have a look on closer look here. This was a resistance here, right? Multiple time rejected on this area, right? And this was a breakout. So breakout and retested, and we got the bounce. We don't know how long it will survive, but we can go close look and decide at what point we can consider that this reversal has happened. So we'll take this line, we'll take all the peaks till whatever peaks it has fallen, till last peak, from where it was going down only. So this is a trend from where it is coming up. So now we can decide that, now we are on the hourly chart. So this will not be very, you can say, strong resistances, because it's hourly chart resistances, right? So here I can say that price has taken some support here, and once broken, tried to break out once again here. So for me, 405 is a resistance. Anybody has a question here? Why not here? Why not here? Those are also resistances. This is also a resistance. Multiple point we will face this price when we'll move up, it will face the resistance. But before coming here at this price, at what price it was consolidated? किस प्राइस पे वो रुक रहा था? Can I say 405? यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया, बाउंस करके 405 को ही रेजिस्टेंस लिया, right? So after 405, this will be little better, because till now the latest trend is downward, right? Latest trend is downward. So whenever we are taking a reversal trade, at least we should at certain point say that now trend is reversed. From here, if it fails, we can immediately exit. So the benefit of entering here is that our stop losses will be low. And at least there is a good chance that it will go up. Here, I don't know. It might go down. So if I'll take a lot of trade on this zone, my accuracy, that the accuracy I was talking about, that if somebody is 50% right or 50% wrong, he can be more wrong on this area. When he will take trade on this area, he will be more right. So
accuracy will improve once you will take the trade on more bullish side. Okay. So the benefit of accuracy is even if you are winning 10% and losing 10%, and if you are 80% accurate, so still you will earn. Right? महेश जी क्लियर है? यहाँ पे आपका ज़ेम्पॉक क्या है इसका नाम? इसको तो yes complex दो दिन याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसका. opposite of complex. ओके, कॉम्प्लेक्स. ओ, ऑपोजिट ऑफ कॉम्प्लेक्स. ये तो सत्यम जैसा स्टोरी लग रहा है. माइटास एंड सत्यम. हाँ, Yes. ओके ओके. एनीवन एल्स? चलो Sub Bank of Baroda. In the refractories, सर कहाँ से नाम ले आते हैं? ये स्टॉक है इधर बस मार्केट yes. में? stock है. मैं आज ही शाम को देख रहा था. Can you just see the in the refractories? IGS. हाँ, क्योंकि वो 10-20% पक्के तौर पे ये 20% बढ़ा होगा आज, इसीलिए हाँ, आपने देखा yes. है. yes. Just before the class. देखें सर, मैं इतना इंट्यूशन तो मेरा पता है. Gases का gas. चलो सर, मंथली से शुरू करते हैं. इसका पहले तो सबसे पहले बताइए इसका मार्केट कैप कितने का है, क्योंकि अगर सर्टेन मार्केट कैप के नीचे है तो मैं चार्ट ड्रॉ करना पसंद नहीं करता हूँ. 500 करोड़ के नीचे ये सब चार्ट हवा में उड़ जाएंगे. देखो समझो, जब आप समझो एक ठेला वाला 20 किलो आम लेके बैठा है, एक सिंगल आदमी आके पूरा आम उठा सकता है. राइट भाई, पैक करो सारा. बात समझो. तो जब छोटा मार्केट कैप होता है ना, तो कोई भी आके पूरी दुकान खरीद सकता है. तो उसका, और एक ही दिन में सपोज 2 पार्टनर हैं, 200 करोड़ वाले, और लड़ गए. 400 करोड़ की कंपनी है, एक ही दिन में 50 करोड़ का आइटम बाहर भेज दिया ना, सारे सपोर्ट, सारे रेजिस्टेंस सबके सब धरे रह जाएंगे. हाँ, तो पहले, सबसे पहले ना चार्ट ड्रॉ करते वक्त हमेशा ये याद रखिए, नाव कितनी बड़ी है जिसमें तैरने जा रहे हैं. बहुत छोटी में तो मत तैरिए. स्टीमर लीजिए, लेकिन एटलीस्ट उसमें थोड़ा इंजन तो होना चाहिए ना, कितनी दूर की सवारी करने जा रहे हैं. तो इस तरह के फंडामेंटल्स. फर्स्ट इज फंडामेंटल्स. तो आप जब भी इस तरह का, आज 20% बढ़ा है, वो अगले दिन ये देखिए जरा यहाँ कितना डाउन आया. जरा यहाँ से हाई क्रॉस करिए. 271 से ये कहाँ तक आ गया था? 89. 2 महीने में. राइट, मंथली चार्ट में. खैर इस महीने में 2 महीने में तो बहुत कुछ हुआ था ये तो, लेकिन अभी हम रिसेंट में भी देखेंगे, इसमें इसी तरह के मूवमेंट्स हमको देखने को मिलेंगे. तो अभी रिसेंट में इसको भूल जाते हैं, पिछले मार्च को भूल जाते हैं. चलिए, यानी इसने लास्ट ईयर जो फॉल आया ना कोविड के बाद, वो आज तक कवर नहीं कर पाया. बहुत सारे स्टॉक, 90% स्टॉक अपने जनवरी 20 के ऊपर ही हैं. जो नहीं है उनमें कोई बहुत बड़ी खराबी है. जो अभी भी जनवरी के हाई को नहीं क्रॉस किए, तो ओके, वो हो सकता है उससे बिजनेस इंपैक्ट ज्यादा आया हो कोविड की वजह से. आई एम नॉट सेइंग दैट स्टॉक विल नेवर रन और उनका कोई फ्यूचर ही खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है. हाई स्कूल में फेल हुआ लड़का फिर तो ग्रेजुएशन तो कर ही सकता है ना, फिर से पास होके. तो अभी ये जोन में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बात करते हैं. चलिए भूल जाते हैं इसकी सारी कहानी. तो ये पर्टिकुलर एरिया एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है. एक बार ये ऊपर चला गया था ना, इसे फेक आउट मान लेता हूँ, फेक ब्रेकआउट मान लेता हूँ. लेकिन अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ प्राइसेस हमेशा इसी रेजिस्टेंस के नीचे रहे. आज पहली बार ब्रेकआउट हो रहा है. सो देयर इज अ चांस कि इट विल गो अप. अभी ट्रेंड देखते हैं इसका कि ट्रेंड क्या चल रहा था. तो नीचे से लो ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, एक अच्छा सा ट्रेंड बन रहा है. तो यहाँ हम भी ड्रॉ कर देते हैं ट्रेंड. ये लो पॉइंट्स हैं, इन लो पॉइंट्स को मैच करते हुए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. ये ट्रेंड हो गया. राइट, हमें अब ये ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक होगी तो वो स्टॉक से एग्जिट हो जाना पड़ेगा. चलिए पैरेलल ड्रॉ करके देखते हैं कुछ पीक्स वगैरह कंफर्म हो रहे हैं क्या. तो यहाँ से लिया इस पॉइंट को. एक्सट्रीम लो जो मिले हैं, जैसे ये मिला 2014 का और ये मिला है, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, या ये पॉइंट. कौन सा बेस्ट रहेगा वो ड्रॉ करने के बाद पता चल जाएगा. और एक्सट्रीम हाई को कवर करेंगे. अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है. देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे सारे पॉइंट मैच कर रहा है. राइट, और तो और यहाँ सेंटर पॉइंट के पास भी रेजिस्टेंस देखने को दिख रहा है. सेंटर पॉइंट भी
जनरली होता ये है ना कि प्राइसेस सेंटर के ऊपर नीचे चलते हैं, ये एवरेज है, मीन एवरेज है, वहां पे चल रहा है। कोई जरूरी नहीं है, कभी भी बॉटम पकड़ के चल सकता है, कभी रेजिस्टेंस टॉप पकड़ चल सकता है, पर रेंज एक पता चल गई कि एक्सट्रीम टॉप एक्सट्रीम बॉटम हो, राइट। अभी इस एक्सट्रीम टॉप एक्सट्रीम बॉटम में जब एक्सट्रीम टॉप पे पहुंचेगा तो आपको केयरफुल रहना है। प्रीवियस रेजिस्टेंसेस को क्रॉस कर रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, यू कैन टेक द ट्रेड। रिस्क क्या है, 173 के नीचे क्लोज हुआ, फिर से एग्जिट हो जाओ, क्योंकि फिर यहां तक भी आ सकता है, यहां तक भी आ सकता है, यहां तक, वी नेवर नो। अब वो बीच बीच में सारे सपोर्ट होंगे, वो सपोर्ट एक एक करके टूटते जाएंगे। अगर टूटना होगा तो, आई एम नॉट सेइंग टूटते जाएंगे, देखना पड़ेगा, राइट। जैसे ये एक सपोर्ट होगा, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो उसके नीचे जाएगा, यानी यहां से ब्रेक हुआ तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि वो फिर यहां तक आएगा 150 तक। वो ब्रेक हुआ तो उसके नीचे वाले पे चला जाएगा। नेक्स्ट फ्लो आएगा। हाँ, जो ये, अब ये पॉइंट, ये इतना वोलेटाइल है ना, इसमें ज्यादा वॉल्यूम नहीं होगा तो, और ज्यादा ट्रेड नहीं होती होगी, तो इसके लिए ये क्लीन नहीं है ये जोन। तो हम क्लीन जोन लेके चलेंगे, तो ये एक पर्टिकुलर क्लीन जोन है जहां से वो सपोर्ट ले ही रहा है, राइट। तो ये टूटा तो यहां तक भी आ सकता है। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ चार्ट, ट्रेड और नॉट ट्रेड, इट्स अप टू यू। ओके, कोई डाउट है इसमें, यहां तक में इस चार्ट में? प्लीज आस्क द क्वेश्चन। देखिए, ये रिवर्सल थी, ये डाउनवर्ड था, यहाँ पे भी आप चैनल बना सकते हैं और आपको रिवर्सल पता चलेगा। जैसे ये पॉइंट लिया पीक, इसके नेक्स्ट पॉइंट जो भी पीक बन रहे हैं, यहाँ तक अगर आपने ले लिया, यहाँ से शायद इसके पहले ये भी ले सकते थे, मे बी, वो बहुत क्लीन ट्रेंड नहीं है, तो यहाँ से लेके देखते हैं या यहाँ से लेके देखते हैं। यस, this was a falling trend. Now this is a perfect. This is how you also have to do. एक जगह आपको जाके जहां पे ये सारे सेंटर पॉइंट्स, ये सारी चीजें मैच करने लगी। हाँ, ओके, तो यहाँ क्लियर है। देखिए, ये सेंटर लाइन भी काम कर रही है, ये फॉलिंग ट्रेंड था, फॉलिंग ट्रेंड से स्टॉक बाहर आया और प्रीवियस, अब ये अप ट्रेंड में आ गया है, प्रीवियस हाइस के ऊपर चला गया है। इस पॉइंट को छोड़ देते हैं। देखिए, ये हाइस के ऊपर चला गया, उसके ऊपर कंसोलिडेट हो गया, तो सो एवरीथिंग इज गुड हियर। सो ट्रेड पर्सपेक्टिव इट्स फाइन। प्रीवियस पूरा ट्रेंड खत्म हुआ, बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया, प्रीवियस सारे रेजिस्टेंसेस को, मेजर रेजिस्टेंसेस को क्रॉस कर रहा है, जो पीक बना था वहां तक जाने का पोटेंशियल है, पहले गया था, यहां तक जा सकता है, दिस कुड बी योर फर्स्ट टारगेट, वहां पे कॉशियस रहना है आपको। Anyone else? Let's take one more example. We have few minutes. Bank of Baroda. Bank of Baroda, BOB नहीं आएगा, बैंक बड़ौदा, बैंक बड़ौदा, ओके, बैंक बड़ौदा। इतनी लाइन कैसे डिलीट करेंगे? ओके, इसी पे बता देता हूं। देखिए, इस जोन में ये स्टॉक ऐसे ऊपर चलता था, तो इस जोन का ट्रेंड कैसे था? ये ट्रेंड था, इसका ग्रोथ का ट्रेंड था, और जिस दिन ये ट्रेंड खत्म हुआ, देखिए ये ग्रोथ का ट्रेंड था, वो खत्म हुआ, तो यहां से फॉल होने के बाद उसने इस ट्रेंड को ब्रेक करने की कोशिश की, प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये देखिए यहाँ प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट मिल गया, राइट। हमें वो रेजिस्टेंस से कभी क्रॉस नहीं किया, नीचे चला आया। अब हर बार उसने एक एक सपोर्ट ब्रेक किया है, जैसे ये पर्टिकुलर एरिया एक सपोर्ट एरिया था, देखिए बार बार प्राइस वहां से बाउंस होते थे, वो ब्रेक किया, राइट। देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, वो ब्रेक किया, ट्राइड टू रिटेस्ट इट। हमेशा ब्रेकडाउन भी रिटेस्ट होता है, तो कई बार आपसे निकल जाता है ना, तो अगर थोड़ा लकी रहे आप तो ये रिटेस्ट में यहाँ पे निकल सकते हैं। तो फिर वहां से फिर ब्रेक हो गया, फिर ये सपोर्ट था, वो भी ब्रेक हो गया, ये सपोर्ट है, राइट, यहाँ से प्राइस उठा है, तो दिस इज क्लियरली अ सपोर्ट, क्लियर।
यहाँ से प्राइस उठा है तो ये सपोर्ट था, वहीं से अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है वही प्राइस. इज दिस लाइन a support line, is resistance acting as a resistance? Okay. Agree? Yes. अभी येलो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, आपको पता है इसी ट्रेंड में फॉल कर रहा है, उसके भी नीचे है. ये प्राइस जो फॉल कर रहा है ये इस येलो लाइन के नीचे फॉल कर रहा है और ये प्रीवियस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पा रहा है. तो इसमें अच्छी ट्रेड कब बनेगी? जब ये इस रेजिस्टेंस से भी ऊपर हो जाए और इस फॉलिंग ट्रेंड चैनल से भी बाहर आ जाए. सुपर बुलिश नहीं हो जाएगा, रातों रात भागने नहीं लगेगा, हो सकता है भागे, पर देयर इज ए गुड चांस कि इसके ऊपर आके यहाँ कंसोलिडेट होगा, यहाँ पे, यहाँ से निकलेगा, एक थोड़ा निकल के यहाँ पे कंसोलिडेट होकर ऊपर जा सकता है. पर एटलीस्ट इसका जो गिरने के दिन थे वो खत्म हो जाएंगे. अगर ये येलो लाइन, आप ये येलो लाइन ड्रॉ करना सीख जाओ, आपका 90% काम खत्म हो जाएगा. हर टाइम फ्रेम पे इसको ड्रॉ करो, आप इमीडिएट फाइंड आउट करो पीक्स कहाँ बन रहे हैं, उस पीक्स पे ये लाइन ड्रॉ करो, जब भी ब्रेकआउट आएगा वो ब्रेक ऊपर की तरफ वहां से जाएगा. और ये हमेशा एक मेजर पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो इमीडिएट जहां से प्राइस रिटर्न हो रहा है. तो अभी ये पॉइंट भी है, राइट, यहाँ प्रीवियस पीक बना है, तो दिस विल आल्सो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, बिग रेजिस्टेंस, राइट. हाँ, यहाँ पे एक आपको ये रेड लाइन देखिए, 50 वीक की भी लाइन आ रही है, तो सारी चीजें 95 96 पे ओवर होंगी, तो इसके बुरे दिन हम कह सकते हैं वहां खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद एक नया ट्रेंड एस्टेब्लिश हो सकता है. ओके, क्लियर? चलिए, एनी क्वेश्चन आंसर? 1 मिनट लेफ्ट ओनली. No. तो सब लोग अपना एक कम से कम 1 या 2 स्टॉक हर क्लास, हर सेशन के पहले जो है अपना एक रखा करिए आपके दिमाग में, और जो भी हमने लास्ट सेशन में किया है उसको अपना रिप्लिकेट करिए उस स्टॉक पे और शेयर करिए कि मेरा ये लाइन मैंने तो यहाँ बना दिया था, आपने यहाँ क्यों बनाया. तो अगर आपका एक बैकअप प्रिपरेशन रहेगा और वही सेम स्टॉक अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट कहाँ करना चाहिए. ओके, चलिए, see you guys Saturday, and most probably from next week we will have a Friday and Saturday sessions. Okay. 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 Okay, Thank see you. you. Bye bye. Thank you. Good night, Darpan ji. Good night. Bye bye. Good night to all.